Jai Shri Ram friends, today's lecture is about alternating current, that is transformer, which is the last topic of this chapter. Let us start. What is a transformer? So as you can see from this diagram, transformer is a device which converts lower alternating voltage at higher current into higher alternating current at lower current. Okay, so finally we can say it is used to transfer from power from one circuit to another circuit by either stepping up the voltage or stepping down the voltage. Now the principal working is basically the mutual induction principle, right? So, what is mutual induction? It is a phenomenon of inducing EMF in the secondary coil due to change in current in the primary coil, and hence the change in magnetic flux in the secondary coil. So, this is working principle of transformer. Now, different types of transformers. For example, this is a step of transformer in which primary voltage is smaller as compared to secondary voltage. Okay, and in between there is a core. Both sides windings है आपकी. Primary side की windings के number of turns NP है, secondary side के NS है. So, in case of step of transformer, secondary turns are more than primary turns. Therefore, this is used to step up the transformer. So, जिस side पर turns ज़्यादा होंगे, उस side पर voltage ज़्यादा होगा. As you can see from this diagram. Similarly, we can have step down transformer also, just opposite to step up. मतलब यहाँ पर जो secondary turns होंगे वो primary turns से कम होंगे. So this is called step down transformer, which is because it is converting high voltage into low voltage. So these are two different types of transformers. Now EMF equation of ideal transformer. Now first of all, what is ideal transformer? Ideal transformer is one in which there are no losses, means efficiency of transformer is 100%. So we shall see further what is efficiency. Now for timing, you can see this induced EMF in the primary winding as per Faraday's law of electromagnetic induction, that is EP is equal to minus of N dt of phi. This dt of phi is nothing but the rate of change of flux in the core. ये आप जो आप यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स देख रहे हैं कोर में, ये इसका rate of change है, because we are applying the AC. तो transformer is an AC device which is used to convert the power. Okay, from one circuit to another circuit, it is transferring the power. Similarly, induced EMF in secondary winding is ES is equal to minus of N S d phi by dt. Means this d phi by dt remains common in both the winding. So therefore, we can say from equation 1 and 2 that the ratio of secondary EMF to primary EMF is nothing but the ratio of the turns on secondary to primary. And in this particular diagram, you can see further that the voltage is Vp on primary side and Vs on secondary side. Okay, so depending on the level of the voltage, either the transformer will be step up or step down. Means if Np and Ns ratio is different from 1, then it would be step up or step down. Okay, now in case of ideal transformer, you can say this Es upon Ep is equal to Ns upon Np, and this is also equal to Ip upon S. Is means on primary side voltage is Vp and current is Ip. Okay, and secondary side voltage is Vs and current is Is. So in case of ideal transformer, this power remains equal, means equal power is transferred. Vp Ip is equal to Vs Is. So you can say Vp upon Vs is equal to Is upon Ip. This is इन केस ऑफ द सप्लाई वोल्टेज रेशियो. और ये ईपी अपॉन ईएस जो है या ईएस अपॉन ईपी जो है डिफरेंट होता है ईपी अपॉन ईएस से. अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है देन दिस इज आल्सो इक्वल टू ईपी अपॉन ईएस. मतलब वीपी आपका ईपी के बराबर होगा और आपका ईएस जो होगा वो बीपी के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि उसका कारण क्या है, वाइंडिंग में कोई लॉसेस नहीं होंगे. तो ये आपका ये ईएमएफ इक्वेशन हो गया ट्रांसफॉर्मर का. एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, दिस एफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर ईटा एंड द expression is nothing but the output power and input power which is multiplied by 100 because efficiency is measured in percentage. Now, energy losses in transformer. There are different types of energy losses. I'm just listing out these. First one is copper loss. Second one is eddy current loss. Then hysteresis loss, flux leakage, and humming loss. Okay. Just these are the names of the different losses. Okay. Now, types of transformers and their uses. As you can see here, there are different types. For example, power transformer, single phase transformer. You can say step down transformer, step up transformer, or depending on the application, these are different types of transformer. For example, you can have toroidal transformer. तो दोस्तों ये जितने भी आपके जो आपके ट्रांसफॉर्मर्स के टाइप्स हैं वो उनके एप्लीकेशन के बेस्ड है. कुछ लो पावर में यूज होते हैं, कुछ हाई पावर में यूज होते हैं. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आयरन को ट्रांसफॉर्मर, और यू कैन हैव फेराइट ट्रांसफॉर्मर्स. ओके, ये और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर. तो दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स व्हिच वी आर यूजिंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन. आप देखिए यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स क्या है. तो यू कैन से नंबर 1 यूजेस स्मॉल ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड इन रेडियो रिसीवर्स, टेलीफोन्स और लाउड स्पीकर्स एटसेट्रा. Second application is in voltage regulators for TV, refrigerators, air conditioners, computers, etc. In established power supplies, we use the transformer. Similarly, a step-down transformer is used for obtaining large current for electric welding, or a step-up transformer is used for the production of X-rays. Similarly, in the transmission electric energy from the generating station to consumers, we use the transformers, which are power transmission and distribution transformers. Okay. Now, let us solve one particular numerical problem, which is nothing but the primary coil of an ideal step-up transformer has 100 turns and transformation ratio is 100. Okay, the input voltage and power are respectively 220 volt and 100 1100 watt. Okay, now ये आप जो ट्रांसमिशन रेशियो कह रहे हैं, ट्रांसमिशन रेशियो इज नथिंग बट एनएस अपॉन एनपी. मींस सेकेंडरी और प्राइमरी का जो रेशियो होता है उसको हम ट्रांसमिशन रेशियो बोलते हैं. तो हमें यहाँ 5 चीजें कैलकुलेट करनी है. नंबर ऑफ टर्न्स, करंट इन प्राइमरी, एंड दिस वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी एंड पावर इन सेकेंडरी. तो देखिए सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है. एनपी की वैल्यू दे रखी है, एनएस अपॉन एनपी इज गिवन व्हिच इज ट्रांसमिशन रेशियो, एंड दिस इनपुट पावर, इनपुट वोल्टेज और ये प्राइमरी वोल्टेज आपका दे रखा है 220 वोल्ट, एंड पावर इनपुट इज आल्सो गिवन एज 1100. तो सिंपल है क्वेश्चन. पार्ट ए एनपी, एनपी इज नथिंग बट 100 बिकॉज हमारे पास एनपी की वैल्यू 100 है. तो एनएस अपॉन एनपी से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनएस एज 1000.
सिमिलरली बी पार्ट में आपसे पूछा करंट इन प्राइमरी, तो करंट इन प्राइमरी के लिए आप करेंगे क्या करेंगे यहाँ पर, करंट प्राइमरी के लिए P1 अपॉन EP कर दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि VP इंटू IP इज इक्वल टू P पावर, तो पावर के लिए आप करंट निकालना है प्राइमरी तो P अपॉन EP कर दीजिए, तो 1100 आपकी जो है पावर है इनपुट पर और 220 वोल्ट प्राइमरी साइड का, दिस बिकम्स 5 एम्पियर। सिमिलरली सेकंड पार्ट इज नथिंग बट द कैलकुलेशन ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज दैट इज NS अपॉन NP इंटू EP, जैसे फॉर्मूला आपको बताया, 100 इंटू 220 दैट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ 22,000 वोल्ट। ओके, डी पार्ट secondary current is nothing but output power upon the secondary voltage. Output power same as input power because we are talking about ideal transformer. So this is 1100 upon 22,000 volt अभी आपने निकाला तो इससे आ जाएगी 1 upon 20 ampere. Similarly, this part is nothing but the calculation of power in secondary which is nothing but output power of P1. Okay, so this is 1100 watt. So this is all about today's lecture. दोस्तों आपको lecture कैसा लगा? And thank you for watching this video. जय श्री राम.